three enzymes and five coenzymes or cofactors in them. And these are the names of the cofactors and these are the names of the enzymes. So you have to learn them, you have to remember them by their names. Okay, you can use a mnemonic to learn them, to memorize them. But you can see as well in this chart that what type of reactions are being catalyzed by these type of enzymes or the cofactors. But predominantly, if you see that it is oxidative decarboxylation type of reaction. The rest of the two reactions are the transfer reactions, actually, in which there is transfer of the acetyl group or regeneration of one of the cofactor, which is the lipoic acid. So without going into the much detail of the complex, you just need to know that this pyruvate dehydrogenase complex converts pyruvate into the acetyl CoA, making it ready to get enter into the citric acid cycle. Okay, so this is the reaction that I have just explained to you with the help of the pyruvate dehydrogenase complex. And this reaction is irreversible and taking place where? In the mitochondria, in the inner part of the mitochondrial membrane. Now, why do we do all this? As I explained to you earlier, what we did in the first stage, we converted glucose by the glycolytic pathway into the pyruvate. Then it was taking place in the cytosol. Then this pyruvate crosses the mitochondrial membrane, enters into the mitochondria, where the second stage takes place, that this pyruvate is converted into the acetyl CoA. And in the third stage, this acetyl CoA, this is TCA, not PAC. This acetyl CoA gives rise to some carbon dioxide, some water, some NADHs, FADHs, and GTP. So this is how. Now from here we will see that what Kreb cycle actually is. The citric acid cycle is also known as a Kreb cycle. Krebs, in the memory of Adolf Kreb, which discovered that pathway. He was a British biochemist and earned a Nobel Prize for that as well. So Adolf Krebs, so that is why we call it Kreb cycle. Its other name is tricarboxylic acid cycle as well. The citric acid cycle has three names: the citric acid cycle, Kreb cycle, or the tricarboxylic acid cycle. Why we call it tricarboxylic acid cycle? Because this is the structure of citric acid. Since it's a citric acid cycle, and this is the structure of citric acid, and this citric acid contains three carboxylic groups within it, three carboxyl acids within it. So since it contains three carboxylic acids, so that is why we call it tricarboxylic acid cycle. Because the structure of citric acid contains three carboxyl group, that is why we call it tricarboxylic acid cycle. Why citric acid cycle is important? It is important because ये मैं हर क्लास में बताता हूँ और ये आप हमेशा के लिए याद रखें कि Kreb cycle or the citric acid cycle is not only the carbohydrate metabolic pathway. It is not specific for the carbohydrate, but it is the final common pathway for the oxidation of all the fuels, such as proteins, such as lipids, and such as carbohydrates. तो ये तीनों fuels का कॉमन फाइनल पाथवे है जिसमें जाने के बाद completely oxidize होते हैं ये fuel. If you can see over here, you can have amino acids, you can have monosaccharides, you can have fatty acids. They all get converted into the acetyl CoA, and this acetyl CoA is actually the initiating point, the kick-start point of the citric acid cycle. And from here, these fuels enter into the citric acid cycle and give you some NADHs. We need these NADHs. This is the purpose of having this cycle. Why do we need these NADHs? We will see in a while. But these NADHs give rise to some ATPs as a result of oxidation, phosphorylation. So that means that all these pathways or cycles are very closely interconnected or interlinked with each other.
So because if there is no oxidation of glucose, no oxidation of fatty acids, there will be no formation of acetyl-CoA. If there is no formation of acetyl-CoA, there will be no citric acid cycle. If there is no citric acid cycle, there will be no generation of NADH. And if there are no NADHs, there is no transfer of electrons, and there is no oxidative phosphorylation and no ATPs. So this has to be done as a metabolism within each and every cell of the body. So this is the importance of the citric acid cycle. Now, what are the functions of it? As I told you that it drags, it extracts some ATPs, energy from the fuel molecule, right? So energy generation is a purpose. It removes electrons from acetyl-CoA and uses them to form NADH. अब ये जो NADH है और FADH है, ग्लाइकोलिसिस में हमें NADH मिलता है, TCA में हमें NADH और FADH मिलता है. इन NADH और FADH के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, and these high energy electron carriers need to be transported, need to be shifted where? To electron transport system. जब वो वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में शिफ्ट होंगे तो उनसे ATPs बनेंगे as a result of oxidative phosphorylation, and these protons then flow back through ATP synthase complex and generate ATPs from it. Okay. So more than 95% of the cell energy is coming from the citric acid cycle plus oxidative phosphorylation. जब ये दोनों प्रोसेस कंबाइन होंगे और सीक्वेंशियली अपने रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे तो सेल को एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ ATPs. नाउ वी विल सी कि ये होता कैसे है. ओके, दिस इज व्हाट you can see. This is cytosol and this is your mitochondria. So what's happening here actually? This in the cytosol glycolysis is taking place, in which what happened? Glucose was oxidized to pyruvate as a result of glycolysis. मिला क्या उससे? उससे ATP मिले थे, 2 डायरेक्ट ATP मिले थे सबस्ट्रेट लेवल पे, और क्या मिला था? 2 NADHs मिले थे. ठीक है, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स एट द मोमेंट. अभी इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते, अभी सिर्फ NADH की बात. नाउ देन उस पाइरुवेट के साथ क्या हुआ? वो पाइरुवेट चला गया विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ? इस पाइरुवेट की ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो गई, तो ये बन गया एसिटाइल-CoA. फिर ये एसिटाइल-CoA, अब ये क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या हो रहा है? सिट्रिक एसिड साइकिल हो रही है. ये एसिटाइल-CoA सिट्रिक एसिड साइकिल में आ गया. इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें कुछ और NADHs मिलेंगे, कुछ FADH मिलेगा, और एक और हमें ATP मिलेगा जो कि सबस्ट्रेट लेवल होगा, नॉट थ्रू द NADH FADH. व्हाट विल बी द थर्ड स्टेप? इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ग्लाइकोलिसिस में NADH की फॉर्म में, और इस NADH और FADH में जो कि हमें क्रेब साइकिल से मिले, ये सारे के सारे आ जाएंगे किधर? किधर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि कहाँ हो रही है? वो भी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. और जब इनकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होगी इन इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमें क्या मिलेगा? ATPs मिलेंगे. तो दिस इज हाउ सेल जनरेट्स ATPs. इनकी डिटेल मैकेनिज्म्स हम बाद में करेंगे. So this is the overview of the citric acid cycle. Now, we call it a cycle. We are not calling it a pathway. Why we call it cycle? Because it is starting from some point and undergoing a closed circle, a closed loop, and finishing at the same point. ठीक है? तो जिस precursor से शुरू कर रहे थे, एंड में वही बनाना है. तो closed loop है, इसलिए हम इसको cycle करते हैं. तो इसका input क्या है? इनपुट है इसका एसिटाइल-CoA, एंड एसिटाइल-CoA में कितने कार्बन्स होते हैं? 2 कार्बन्स होते हैं. और इसका आउटपुट क्या होगा? तो आपने पूरे पाथवे में रखना जहन में ये बात है कि इसमें कहाँ पे कितने NADH प्रोड्यूस हो रहे हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, और कितना GTP हो रहा है. तो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द क्रेब साइकिल. एज यू कैन सी हाउ मेनी
acetyl CoA 2 carbon. How many NADHs? 1, 2, 3 NADHs. Okay. How many FADHs? Only one FADH. And how many ATPs? Only one ATP in the form of GTP. And how many carbon dioxide? 2 carbon dioxide. So this is the net production of the citric acid cycle. Now, let's see how it's taking place. Now we know the location, now we know the precursor molecule for that, now we know the overview of the citric acid cycle, and now we know why this cycle is taking place in the mitochondria. The first step is the formation of citrate or the citric acid, since it's a citric acid cycle. The formation of citrate. कैसे बनेगा ये citrate? एसिटाइल CoA कहाँ से आया? पायरुवेट से आया, ठीक है। जब ये एसिटाइल CoA कंबाइन करेगा ऑक्सैलोएसिटेट से, अभी ये भूल जाएं कि ऑक्सैलोएसिटेट कहाँ से आया। तो जब ऑक्सैलोएसिटेट और एसिटाइल CoA आपस में कंबाइन करेंगे तो व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट वुड बी? इट वुड बी ए कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये जब कंबाइन करेंगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और इनकी कंडेंसेशन से जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम कहते हैं सिट्रेट। तो इन स्टेप 1 citrate is formed in the presence of enzyme citrate synthase. Okay. The second step is citrate is isomerized to isocitrate. तो उसका नाम ही isocitrate है, तो आपको यहाँ से अंदाजा हो रहा है कि इसका आइसोमर है, citrate का आइसोमर है। तो forget about this reaction, intermediate one. तो simply citrate की isomerization होती है into the isocitrate. This is step 2, and the enzyme involved here is aconitase. In step 3, isocitrate is undergoing what type of reaction? Redox reaction. Dehydrogenase आ रहा है, तो जहाँ पे भी dehydrogenase आएगा redox होगा, जहाँ पे भी redox होगा वहाँ पे NADH या FADH की involvement होगी। तो isocitrate is oxidized to oxaloacetate, oxalosuccinate, and finally into alpha ketoglutarate. So what's happening? Oxidation हो रही है, तो first NADH is produced in this reaction in the conversion of isocitrate to alpha ketoglutarate, and as you can see, the first carbon dioxide is also being removed over here. Okay. Now, step 4. Again, the oxidation, because NAD is involved. Second NADH is produced and second carbon dioxide is removed. Again, oxidative decarboxylation, but this time enzyme is alpha ketoglutarate dehydrogenase. In step 4, succinyl CoA is converted into succinate in the presence of enzyme succinyl CoA synthetase. Now, this is the reaction in which one molecule of GTP over here, GTP is formed, and that GTP serves as energy currency, energy source. तो इस reaction में GTP बनता है. Step 6 to 8, succinate oxidized to fumarate, and FADH, the only FADH which is produced in Kreb cycle is produced in this reaction. When succinate is oxidized to fumarate, then fumarate is converted into the malate, then malate is again oxidized to oxaloacetate. Now, recall the first reaction, which was the condensation reaction. What was happening in that reaction? Acetyl CoA was combining with the oxaloacetate. And from where that oxaloacetate is coming? Oxaloacetate is coming from the oxidation of malate to the oxaloacetate, and this oxaloacetate will combine the second cycle of acetyl CoA with the acetyl CoA, making citrate. Okay, so these are the 8 reactions. Now, okay, succinate dehydrogenase. Now, in malate to oxalate reaction, third NADH is produced. So how many? 3 NADHs, 1 FADH and 1 GDP is produced. So वो मैंने अलग-अलग करके इसलिए बताया ताकि आपको समझने में आसानी हो. If you look at the citric acid cycle, you will look at like that.
Here we have what? Acetyl CoA. This is acetyl CoA 2 carbon compound, and here is oxaloacetate, which is coming from the oxidation of malate. So when oxaloacetate combined with the acetyl CoA in the presence of citrate synthase, it makes citrate. Citrate is isomerized to isocitrate in the presence of aconitase. Isocitrate in the presence of isocitrate dehydrogenase undergo oxidation reduction reaction and removing carbon dioxide, making it alpha ketoglutarate. So first NADH, first carbon dioxide, then alpha ketoglutarate, again the dehydrogenase, making it succinyl CoA, second NADH, second carbon dioxide, succinyl CoA with the help of succinate synthetase, producing some GTP by borrowing some inorganic phosphate from this compound, making GTP, and the succinate undergoes again oxidation reaction in the presence of succinate dehydrogenase, converting it into fumarate, fumarate giving rise to malate, and malate oxidized to oxaloacetate. Again, this oxaloacetate is combined with acetyl CoA, producing or generating the second cycle, second round of the TCA. So how many NADHs? 1, 2, and 3. How many FADHs? Only one FADH over here, and this one. And how many carbon dioxide? 2 carbon dioxide and 1 GTP, right? So this is the overview of the Kreb cycle. Now, how much energy can we extract? How much energy can we obtain from that? We know that कितने NADHs produce हुए TCA में? 3 NADHs ना? तो 1 NADH gave us how many ATPs? एक NADH आपको 3 ATP देता है, और एक FADH आपको कितने ATP देता है? 2 देता है. तो 3 ATPs are coming from 3 NADHs, 9 ATPs. Okay, 2 ATPs from 1 FAD, तो 9 plus 2 कितने हो गए? 11. And 1 ATP is coming from GTP, तो कितने हो गए? 12. So that means one acetyl CoA in one round of TCA gives you 12 ATP. Okay, दोबारा मैं रिपीट करता हूँ. एक एसिटाइल CoA अगर एंटर होगा और एक राउंड कंप्लीट करेगा तो 12 एटीपी मिलेंगे. लेकिन ग्लाइकोलिसिस में हमें कितने पायरुवेट मिले थे? हमें 2 पायरुवेट मिले थे. तो अगर 2 पायरुवेट मिले थे तो कितने पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स में एंटर हुए थे? 2 पायरुवेट एंटर हुए थे. तो 2 पायरुवेट से कितने एसिटाइल CoA बने होंगे? 2 एसिटाइल CoA बने होंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक राउंड एक एसिटाइल CoA 12 देता है. तो अगर 2 एसिटाइल CoA होंगे तो कितने होंगे? 24. तो दिस इज द डिफरेंस एंड दिस इज आस्क्ड, दिस कॉन्सेप्ट इज चेक्ड कि एक राउंड TCA का कितने ATPs देता है. तो 1 एसिटाइल, तो उसका जवाब ये है कि इफ इट इज 1 एसिटाइल CoA, if it is oxidation of 1 acetyl CoA, it gives you 12 ATPs. But if it is oxidation of 2 acetyl CoA molecules, it gives you 24 ATPs, not 12. तो this is the catch in between. ठीक है. और ये जब अगर वो आपसे एक का पूछता है कि जी एक एसिटाइल CoA कितने देता है, तो आपने 12 बताना. लेकिन अगर वो ओवरऑल पूछता है कि फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस टू द TCA नेट जनरेशन कितनी होगी, तो फिर आपको ऐड करके बताना है. ओके, सो दिस इज द एनर्जी जनरेशन. दिस इज द लास्ट स्लाइड. आई जस्ट वांट टू टेल यू द कंट्रोल पॉइंट्स और रेगुलेशन पॉइंट्स. अब ये जो इसके ग्लाइकोलिसिस के, ये बड़ा आसान है कि वो सारे रिएक्शंस जिनमें डिहाइड्रोजिनेजेस हैं, वो सारे के सारे इसके जो रिएक्शंस हैं और पॉइंट्स हैं, वो इसके कंट्रोल पॉइंट्स हैं, वो इसके चेक पॉइंट्स हैं. वहां से पाथवे रेगुलेट होता है. ठीक है, वहां से NADH की प्रोडक्शन और उसकी इनहिबिशन, एक्टिवेशन और इनहिबिशन होती है TCA साइकिल की. एंड दीज आर द रिएक्शंस इन व्हिच NADHs आर बीइंग प्रोड्यूस्ड. ओके,
वन मोर थिंग इज कि क्रेब साइकिल को हम एनाप्लेरोटिक पाथवे भी कहते हैं या एनाप्लेरोटिक साइकिल भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? अब अगर आप इसको देखें, अगर आप सिर्फ ब्लू वाले एरोज पे कंसंट्रेट करें तो ये जो ब्लू एरोज हैं ये आपको क्या दे रहे हैं? ये ब्लू एरोज बता रहे हैं कि क्रेब साइकिल चल रही है। पायरुवेट एसिटाइल कोए में गया, एसिटाइल कोए सिट्रेट में गया, फिर अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, फिर सक्सिनिल कोए, फिर एस्पार्टेट। लेकिन आपको ये जो पिंक और रेड कलर के एरोज नजर आ रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि ये जो टीसीए के इंटरमीडिएट्स हैं ये सिर्फ ना सिर्फ ये कि साइकिल को चलाते हैं बल्कि ये कुछ दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी प्रोड्यूस करते हैं, सच एज सिट्रेट से फैटी एसिड्स बनते हैं, अल्फा कीटोग्लूट्रेट से क्या बनता है? ग्लूटामेट। रिमेंबर ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। ग्लूटामेट से आपके क्या बन सकते हैं? प्यूरिन्स, न्यूक्लियोटाइड्स बन सकते हैं। सक्सिनिल कोए, हीम सिंथेसिस का पहला रिएक्शन याद करो। हीम सिंथेसिस का पहला रिएक्शन में क्या ग्लाइसिन एंड सक्सिनिल कोए पोरफायरिन्स बनाते हैं, ठीक है। और इसी तरह ये ऑक्सैलोएसिटेट फिर ये दोबारा ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन से एस्पार्टेट बना के और डीएनए, न्यूक्लिक एसिड और ये सारी। So that means के intermediates of TCA cycle can give rise to precursors for other pathways as well. So this was